Hello everyone. In our channel's playlist, you will get the other subjects class-wise easily. So you can refer that for your help. Now, we are going to start with Introduction to Euclid's Geometry. So first of all, we will see what are the learning objectives in this chapter. We have to see the Euclid's definitions. There are 7 definitions what are given by the Euclid. Then axioms we have to see. Axioms are nothing but 7 axioms again, and postulates, 5 postulates we have to study, and lastly equivalent versions of Euclid's fifth postulate. These are nothing but 2. So these all you have to study in the Introduction to Euclid's Geometry. If you see first of all Euclid is nothing but a Greek mathematician, and he is known as the father of geometry. He has given many of the things to the field of geometry, on which again Thales and other mathematicians, they have done the work and they had made it for us. Now one by one we will see what these things are. First we will see with the Euclid's definitions. What the definitions has given: a point. For a point, what the definition is? A point is that which has no parts. Suppose we are putting a point here, it has no parts, so that's why it is considered as a point. Then second definition, a line is breadthless length. So when we are saying about a line, it is having only length, it is not having the breadth, so that's why it is considered as a breadthless length. Breadthless means breadth is not there, only we are having length. The ends of a line are points. Always if we are taking a line, the end points are nothing but a point itself. Then a straight line is the line which lies evenly with the points. Evenly, when we are saying evenly, it should be a straight line. If it is not evenly placed on that, then it will not be a straight line. Evenly placed means it should be same. A surface is that which has length and breadth only. When you are saying about a surface here, if suppose if I am joining here, it is having the length as well as the breadth, but it is not having the height. When we are saying height, it will become a 3-dimensional. When we are considering only length and the breadth, it's nothing but a surface. It is called as surface. Now the next definition, the edges of a surface are lines. Again, when we are saying it as a surface, its edges will be a line. Then a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. When you are considering about the plane surface area, when you are telling about a rectangle is nothing but a plane surface area. Like this, it's nothing but a plane surface area which is lying evenly with the straight lines, which is evenly lying on the straight lines. Now we will go for the Euclid's axioms. For axioms, first of all we will see what do you mean by the axioms. Axioms are nothing but the statements which are proved. We are accepting that without any proof. That are nothing but the axioms, and which are applicable to all the branches of mathematics. It's nothing but axioms. Axioms are nothing but what we are accepting without any proof. Without any question, we are accepting them, and they are applicable in all the branches. That is nothing but the axioms. Now we will see axioms here. 7 axioms are given in your 9th standard textbook. Things which are equal to the same thing are equal to one another. So what it means here? If suppose we will see A is equals to B and B is equals to C. A is equals to B and B is equals to C. It means here that this A must be equals to C. Things which are equal to the same things. A B के इक्वल है और B C के इक्वल है. क्या मतलब है इसका? A C के भी इक्वल है. That is your axiom first postulate. Sorry, Euclid's first axiom. Now second axiom. If equals are added to the equals, the wholes are equal. What it means?
दो equal quantities if you are taking. Suppose I am taking 50 kg and one more 50 kg. Two bags of 50 kg and 50 kg. They are equal now. अभी ये ऑलरेडी इक्वल है, इसमें सपोज हम इक्वल अमाउंट ऐड कर रहे हो. सपोज 4 kgs आप दोनों में ऐड कर रहे हो. देन व्हाट विल बी द होल? इफ यू से अगेन 54 यूल गेट 54 यूल गेट. तो जो होल आ रहा है वो भी इक्वल है. अगर इक्वल में इक्वल ऐड कर रहे हो आप, देन द अगेन व्हाट होल विल ऑल्सो बी इक्वल. दिस इज योर सेकेंड axiom. Now the third axiom. If equals are subtracted from equals. पहला क्या है? दोनों इक्वल रहना है. सपोज यू आर हैविंग 10 लीटर्स एंड 10 लीटर्स. दोनों 10 लीटर्स हैं. 10 लीटर्स में से आप 2 लीटर्स और यहाँ से भी 2 लीटर्स सब्ट्रैक्ट कर दो. तो व्हाट द रिमाइंडर? हियर इज ऑल्सो 8, हियर इज ऑल्सो 8. तो आपका रिमाइंडर जो रहता है वो भी इक्वल रहता है. अगर आप इक्वल से इक्वल निकाल रहे हो, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल. दैट इज योर थर्ड एग्जियम. नाउ फोर्थ एग्जियम. थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. कोइंसाइड मतलब इफ सपोज 2 सर्कल्स आर देयर विद द सेम रेडियस. अगर 2 सर्कल्स हैं, सेम रेडियाई हैं, अगर आप प्लेस करोगे वन अपॉन द अदर, इफ 2 सर्कल्स, इफ यू आर प्लेसिंग वन ऑन अनदर, they will be overlap each other. When they are overlapping, it's nothing but coincide. When they will be coinciding, if they are exactly same, then only they will coincide. जब वो coincide हो रहे मतलब वो क्या है? equal है. coincide का क्या मतलब है? अगर आप एक के ऊपर एक रख रहे हो तो वो exactly same रहते, एक छोटा और एक बड़ा नहीं रहता. exactly उसके corners एक दूसरे को touch होते. that is nothing but the coincide. अगर coincide हो रहे तो वो दोनों equal रहते. This is your fourth axiom. Now, fifth axiom. The whole is greater than the part. Very easy it is. Nothing is there. अगर आपके पास एक होल है, सपोज आपके पास एक राइस बैग है 50 kgs का. 50 kgs का राइस बैग है, उसमें से आप पार्ट्स कर रहे हो. लाइक 5 kgs इफ यू आर कीपिंग सेपरेट. तो 5 kgs वो पार्ट हो गए और आपका जो 50 kg था वो होल हो गया. हमेशा होल विल बी ग्रेटर. जो आपका होल रहता, जो ग्रेटर रहता, वो इज नथिंग बट होल. आपके जितने भी पार्ट्स बना लो आप 50 kg में, कि आप कितने भी पार्ट्स कर लो, मिनिमम वो जो भी पार्ट्स रहते हैं स्मॉलर रहते हैं और होल विल बी ग्रेटर. नाउ सिक्स्थ. Things which are double of the same thing are equal to the one another. Things which are double of the same thing. If suppose you are having 50 and here if you are also having 50, then if you will take double of that, then the double will be again equal. The double of 50 is 100. So there again 100 is becoming an equal. Things which are double of the same thing are equal to one another. The same way for halves. Things which are halves of the same thing. If suppose you are having a circle, एक सर्कल में से आप हाफ कर लो उसको, आधा आधा, देन जो दोनों हाफ हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते. 2 halves will be equal to each other. Things which are half of the same things are equal to one another. These are the 7 Euclid's axioms what we are using in your exercise questions. Now we will go for postulates. Euclid's postulates. So first of all we should know what do you mean by the postulates. These are also again the statements what we are accepting, but the thing is it is applicable only in the geometry and which we can prove. So these are nothing but the postulates. पोस्टुलेट का क्या मतलब है? स्टेटमेंट जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो और वो ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल है. एक्सियम्स, ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथ्स. एक्सियम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ब्रांचेस, whereas postulate is applicable only for geometry. Now let's see what the postulates are here. A straight line may be drawn
from any one point to any other point. So what it means, for drawing a straight line, if I am joining these 2 points A and B, I am getting it as a straight line. Any 2 points if we are joining, we will get it as a straight line. Now axiom 2.1, which is very important, given two distinct points. Distinct मतलब अलग अलग. इस आपके पास दो अलग अलग points हैं. There is a unique line. Unique means only one. Only one. Unique मतलब है only one. Line that passes through them. अगर दो points हैं आपके पास A और B, तो उन दो points से आप सिर्फ एक ही line draw कर सकते हो. It's like one line. A, B. If the 2 points are given, only one unique line can be drawn by passing that both the points A and B. अगर आपके दो points के बजाय एक point है, from this one point we can draw infinite lines like here, here we can draw, here we can draw, here we can draw. But when the 2 points are given, we can draw only one line which can be passing through both the points. Now let's see the next second postulate. A terminated line can be produced indefinitely. If suppose it is a line AB, so from the both end points we can draw it to infinite. We can produce it infinitely. From A also we can produce and from B also we can produce. अगर यही आपको line के बजाय ray है, if it is a ray, it can be extended only to one side. बट वही आपको क्या टर्मिनेटेड लाइन में है जो है वो आप दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो. दैट इज योर सेकेंड पोस्टुलेट. नाउ द थर्ड पोस्टुलेट. अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. वी आर नोइंग दिस कि आपके पास अगर सर्कल ड्रॉ करना है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस लेना है, 5 सेंटीमीटर लेना है. आप कुछ भी रेडियस लेके और कोई एक पॉइंट, जो भी आप डिफरेंट पॉइंट्स लेना चाह रहे हो, लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. दैट इज योर थर्ड पोस्टुलेट. फोर्थ पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल. फर्स्ट वी शुड नो कि राइट एंगल क्या है. राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री. एग्जैक्ट 90 डिग्री. तो 90 डिग्री के आप जो भी एंगल्स ड्रॉ कर रहे हो, इट्स नथिंग बट दे ऑल विल बी इक्वल, क्योंकि राइट एंगल एग्जैक्ट मेजरमेंट है 90 डिग्री. आप राइट एंगल्स ABC राइट एंगल ड्रॉ करो या फिर XYZ राइट एंगल ड्रॉ करो, दे ऑल विल बी इक्वल क्योंकि वो 90 डिग्री होंगे. नाउ कम टू द मेन पॉइंट इन दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, एट पोस्टुलेट 5. दिस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री. लेट अस सी दिस व्हाट इट इज. इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on the side on which the sum of the angles is less than 2 right angles. So in our easy words, we will understand it first. दो lines हैं आपके AB and CD. एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है PQ. इन दैट अगर जो इंटीरियर एंगल है, यह एंगल 1 एंड एंगल 2, दिस साइड, दोनों एंगल्स मिला के अगर आप ऐड कर रहे हो एंगल 1 एंड 2, इफ इट इज लेस देन 2 राइट एंगल्स. 2 राइट एंगल्स का क्या मतलब है? एक राइट एंगल मतलब 90, तो 2 राइट एंगल मतलब 180. अगर ये दोनों का सम 180 से लेस है, दैट टाइम इफ यू आर प्रोड्यूसिंग देम, if you produce these lines, they will meet at one point. कौन से साइड पे मीट करेंगे? जहाँ पे इसका सम लेस देन 180 है. What the Euclid's fifth postulate states? अगर आपके दो लाइन्स हैं स्ट्रेट लाइन्स, इस पे थर्ड लाइन स्ट्रेट लाइन पे कट हो रहा है, देन जिधर साइड पे आपका एंगल्स का सम 180 से लेस है, वो साइड पे लाइन्स मीट करते. दिस इज योर यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 180 से अगर दोनों का सम मिला के 180 से छोटा है, तो लाइन्स विल मीट एट एनी पॉइंट, एट एनी वन पॉइंट दे विल मीट. अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे लाइन्स को, ये लाइन्स को, तो वो डेफिनेटली एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते. दिस इज योर यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट. नाउ वी विल सी द equivalent versions of Euclid
fifth postulate. Here, equivalent version is nothing but the same as it's the fifth postulate in a different manner for every line L. So suppose if you are having a line name as L, and for every point P which is not lying on L, P क्या है, एक पॉइंट है जो L पे नहीं है, there exists a unique line. Again unique मतलब one line passing through P and parallel to L. From P how many lines we can draw? Yes, it is obvious, from P we can draw many lines. Suppose I am drawing here like this, I can draw like this, and we can draw like this also. If you see carefully here, if we name this as M, L and M are parallel to each other. तो पॉइंट P से आप बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते, पर वो लाइंस में से सिर्फ एक ही लाइन होती जो L को पैरेलल होती. फ्रॉम पॉइंट P we can draw infinite many lines, but only one line will be parallel to L. This is your first equivalent version. Next, one more. Two distinct intersecting lines. Intersecting means which are cutting at one point. Intersecting lines cannot be parallel to the same line. Suppose these are the two lines which are intersecting each other, line P and line Q. If you want to draw a line which is parallel to the point, parallel to the line Q, अगर आप Q की parallel line draw करें R, Q and R are parallel, but जो R है वो P को parallel नहीं है. At a time आप जो line draw करोगे या तो वो P को parallel होगा या तो वो Q को parallel होगा. दो distinct intersecting lines को at a time we can draw only for the one line. अगर आप P के लिए parallel draw कर रहे हो, then it will be parallel to P, but it will intersect to Q. Hope you have understood these all. When we are doing the next, we will be starting with the exercise questions. If you are having any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.